हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। ये एग्ज़ाम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है। एंड एक और एग्ज़ाम होता है जो प्रेस्टिजियस माना जाता है, जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। लाइक प्रेस्टिजियस तो और भी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन ये टफ एग्ज़ाम होते हैं और आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके ऐसे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं जहाँ आपके पास काफ़ी पावर होती है एंड आप सिस्टम में चेंज लेके आ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है और ये होता क्या है, और यूपीएससी और इसमें क्या फ़र्क है बेसिकली। लाइक काफ़ी मेजर फ़र्क रहता है कि जिस टाइप में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी का होता है वैसे ही इसका ईयरली कंडक्ट किया जाता है। और जैसे ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही हाई कोर्ट के जज लग गए या सुप्रीम कोर्ट के जज लग गए, आप पहले सिविल जज लगते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपको लाइक सिविल जज के लिए ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज लग जाएंगे इससे। सो सेकंड पॉइंट इज कि हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है। लाइक यूपीएससी में अगर आप देखोगे, यूपीएससी में क्या होता है कि सिंगल एग्जाम होता है, कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पे हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है। एंड ये अभी प्रपोज किया गया है अभी न्यूज़ में कि इसको सिंगल, लाइक अभी न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया था कि सिंगल एग्जाम बना देना चाहिए रादर देन हर स्टेट अपना एग्जाम ले। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स थे, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है ये भी कि हम इसको मतलब सिंगल एग्जाम बनाना चाहिए जो हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम रहना चाहिए। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है एंड अभी ये पेंडिंग है। तो अभी के लिए तो ऐसा समझ लीजिए कि हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्टेट में जाके, मतलब कौन सी स्टेट का आपने, कौन सी स्टेट में रहते हैं और कौन सी स्टेट का आपने एग्जाम देना है। और आप मल्टीपल स्टेट के एग्जाम भी दे सकते हैं पर ईयर, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको एक ही स्टेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये कंडक्ट करवाता है पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट का, जो भी स्टेट का है। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है उस स्टेट का, तो वो करवाता है और ये सुपरवाइज होता है उस मतलब उस स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा। एंड अराउंड 24 स्टेट्स कंडक्ट करवाती हैं इस एग्ज़ाम को। इसकी लिस्ट आप कहीं ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी आपको। एंड इसका प्रोसेस क्या रहता है जनरली, जैसे यूपीएससी में तो ये रहता है ना कि लाइक कोई भी एग्जाम में कि उनकी फिक्स डेट होती है, ये भाई फरवरी में होना है या जब मर्जी होना है। इनका क्या रहता है कि इनको कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अपने टाइम पे करवाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है और जैसे ही ओपन होते हैं तो 1 मंथ के बाद प्रीलिम्स होते हैं। उसके बाद लाइक 30 डेज या 60 डेज, ये भी कुछ मतलब वो टाइम स्पेसिफिक नहीं है कितने दिनों के बाद ही मेंस होगा। तो वेरी करता रहता है कि 30 डेज 60 डेज या लाइक डिपेंड करता है। फिर मेंस होता है, उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। सो बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे कि प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। लाइक प्रीलिम्स अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो प्रीलिम्स एमसीक्यू होता है एंड मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं एंड इंटरव्यू में जनरल लाइक आपके बिहेवियरल राउंड होता है। और साथ में ऐसा नहीं कि प्योर बिहेवियरल राउंड, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट प्योर नहीं होता, लाइक उसमें आपके नॉलेज भी टेस्ट की जाती है बीच बीच में। तो वो चीज़ रहता है। एंड ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लाइक जुडिशियल एकेडमी, जो कि हर एक बंदे का ड्रीम होता है जो ये एग्ज़ाम राइट कर रहा होता है, वो जुडिशियल एकेडमी ज्वाइन करता है 1 साल के लिए। एंड वहाँ ट्रेनिंग लेता है, उसको सिखाया जाता है कि जज की क्या क्या पावर्स होती हैं एंड हाउ शुड जज बिहेव। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उनको सिखाई जाती हैं जुडिशियल एकेडमी में। एंड रिगार्डिंग द सिलेबस, तो सिलेबस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट। तो ये काफ़ी वो है कि आप अगर एक स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड लेटर ऑन इन द प्रिपरेशन स्टेज आपने डिसाइड किया कि नहीं यार कोई और स्टेट के लिए मुझे तैयारी करनी है, तो सिलेबस इज डिफरेंट। लाइक इट्स नॉट एंटायरली डिफरेंट बट काफ़ी फ़र्क आ जाते हैं, कुछ कॉमन पार्ट होते हैं एंड कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो केयरफुली अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आपने लाइक यू वांट, एंड उसके बाद ही देन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड
yes, I have already told you कि आप more than one state exam के लिए बैठ सकते हैं, like per year. एंड इसकी जनरल एज, लाइक जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो है 22 से 35। लाइक ये भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, ये भी स्टेट डिपेंडेंट है। एंड ये भी डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है। लाइक अगर कैटेगरी आपकी SC ST OBC है तो इट कैन गो अप टिल 48, एंड इफ यू आर अ वुमेन देन देयर इज अ रिलैक्सेशन इन सम स्टेट्स अप टिल लाइक मोर 10 years are added. So like एज लिमिट इज आई थिंक वेरी गुड। लाइक इसमें एज लिमिट का कोई सीन नहीं होना चाहिए किसी के लिए। एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आल्सो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लाइक कुछ स्टेट्स बोलती हैं वी हैव यू कैन गिव अप टिल 6 attempts, after that like you won't be able to sit for this. And some states don't have any limit, like why to put some limit? So it depends upon state to state. So you see, the problem over here, like everyone has to go and read the state curriculum. Like अगर एक single होता तो these things could have been avoided, but single के भी drawbacks हैं, so I won't get into that. And also yeah, so जिस state के लिए आप apply कर रहे हैं, so like be ready to learn the local language for that state. क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो क्योंकि आपने जितनी भी आपने राइटिंग्स देनी होती है, ठीक है, जितने भी आपने सब लिखना होता है व्हेन यू बिकम अ जज, so obviously you will write in the local language, and whenever they talk, the lawyers talk or anyone will talk, they will prefer their local language. So you must be well acquainted with the local language of that state. And all, like I said, that all India Judicial Services is not implemented yet. So that is like again a different topic. And the salary, like generally people don't join judicial services for this salary. Like it's 30,000 to 50,000, but it's again a lot. And the powers and the perks which comes with the judicial services are a lot more, as when we see the salary and the decision which you have. Like you will be deciding the future of someone, so it's a lot of power which you will have. So you will have to judiciously take like use your power. So I think salary won't matter that much, but the powers which you will get are definitely worth it. And you should definitely give this exam if you are a law student. Like we will come on to the eligibility part also, like who can give these exams. So the eligibility is very simple, that you should have a bachelor degree in law. And if you are like if you have done the BTech, then you will have to like uh, maybe do a 3-year course, uh, additional course, to be eligible, to be sit for to be eligible for this exam. And plus you have to be qualified to be an advocate under the Advocates Act. So this is the eligibility. And also you don't need any experience. This is very good thing. Like the youngsters who are just fresh out of college, they can simply just apply to it, and they can prepare when they're in college. So they don't need to wait for the college to get over, because the syllabus overlaps. So that is one very good thing. And regarding the syllabus, so let's talk about the syllabus. So we will pick just one state, which is like, let us suppose Delhi Judicial Service Exams. So this is how their curriculum looks like. So they have just this is not like you can read it during your free time. So basically they are saying it is held in two successful stages. One is prelims, and it obviously it has negative marking. And another is the mains examination. It is a written examination. And then whoever gets selected, they are called for viva vote. That is the interview. So the examination for this Delhi, like Delhi state exam, is that you will have one paper of 200 marks. So it will be MCQ, multiple choice questions. And so the syllabus will be like the Constitution of India, general knowledge, aptitude, and the Code of Civil Procedure 1908, criminal procedure, IPC,
Indian Contract Act, LLP, Arbitration and Conciliation Act 1996, Indian Evidence Act, Specific Relief Act. So these are the acts, and you have to go into the depth and read about it, and then yeah. So these are just the qualifying marks. So the marks which you will score in the prelims, it won't matter. So that is one good thing. And now coming on to the mains examination. So the mains examination is a subjective paper, and so first exam is of the general legal knowledge and the language. General legal knowledge is like they will test your current affairs knowledge, and regarding the language, it's like they will give you a particular language, like let us suppose Hindi, and they will say that you have to convert Hindi to English, and they will give you a script in English. They will say you have to convert English to Hindi, because that's your that will be your one of the activities when you will be sitting as a judge. So you should be well acquainted with that. And the second paper will be of the civil law one. So these are the topics, like these are, they have given just the topic names, but if you will go into the depth, it's like full big books which you will have to read. Hindu law, Mohammedan law, Delhi Rental Control Act, law of torts. So this is one thing, and civil law too. Again, you have to read all these topics. And these carries most marks, like 200 marks, 200 marks. And coming on to the fourth and the last one is the criminal law. So again, here IPC and all that stuff comes. So again, it is of 200 marks. So these are given equal weightages, 200, 200, 200, and this is of 250 marks by the, I'm talking about specifically this state, that Delhi state only, not about any other state. For other states, you have to check their curriculums. So coming on to the interview part again will carry 150 marks. So those who are selected in the mains, they will get a chance to appear in the interview, and then you will be just based on your personality, that whether you have that the personality to serve as a judge or not. They will check your knowledge of each and everything in that particular state for which you are appearing. So that's what goes, and after that, if you clear it, you will become a judge. And coming on to this syllabus, we have already talked about, so there is nothing new in this. So like these are the books, you can always check the websites, which books to refer. And yeah, and yeah, some people I also had the same doubt, that which is the toughest judicial exam, if whichever is the easiest, I will sit for that. So I was doing some research, and I found this very beautiful article on lawseeker.com, that Delhi was like around only, like there were 147 vacancies, and 12,000 students set for that 147 vacancies, and only 50 of them were qualified. That is 34% seats were filled and rest were vacant. So you see how tough it is. And Delhi is a very Delhi has a very difficult, like has a very high bar, it has a high bar for the exam. So you can see the state, and accordingly make the decision, like see the past year trend, what is the qualification rate for that. And like if just to give you, like there were like UP topper, Himachal topper, Uttarakhand topper. These were the toppers who were unable to even qualify in the Delhi Judicial Service interview. So you can just imagine how tough it is to crack it, even if you are the topper of your own state judicial exam. So yeah, it basically depends upon state to state. So this was all about the judicial exam. So if you have any questions, and regarding the judicial services exam, and if you want me to make video on any of the topics in the judicial services examination which you're facing issue with, or which you are too lazy to read about, please put your comments in the comment section, and I will definitely take a look. And if you have any doubts, definitely you can ping on the comments, and do hit the like and subscribe button if you like this video. Thank you so much.